कैटालिटिक कन्वर्टर्स हमारे पास पोल्यूशन के इफेक्ट्स को जो खासतौर पे कार के एग्जॉस्ट फ्यूम से निकलते हैं उसको स्टॉप करने के एक्चुअली स्टॉप नहीं रिड्यूस करना चाहिए रिड्यूस करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, पर्पस बेसिकली ये है कि जितना कुछ हमारे पास पोल्यूटेंट्स की लिस्ट पे आता है हम उस सारे को कन्वर्ट कर सकें किसी ऐसी चीज में या तो पोल्यूटेंट लिस्ट में नहीं आती या लेस हार्मफुल है। ठीक है, पोल्यूटेंट लिस्ट में क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक टॉक्सिक गैस है, इस वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये इटसेल्फ तो कोई बहुत ज्यादा बुरी गैस नहीं है। ठीक है, हम ह्यूमन जो है ना वो हेल्थ के हिसाब से, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं। वन, इट कैन बी easily oxidized to nitrogen dioxide, then it can become a choking gas। ठीक है। टू, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, तो डायरेक्ट इफेक्ट अगर ह्यूमन बॉडी पे ना भी हो तो इसकी क्यूमुलेशन का एटमॉस्फेयर में इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर है। ठीक है, फिर है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। Most of the unburnt hydrocarbons except for which naturally occur in the gaseous form, ठीक है, तकरीबन सब ही बाकी उसके अलावा कार्सिनोजेनिक है। ठीक, मतलब इससे मुराद है अल्केन्स में फर्स्ट फोर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर आप पेंटेन से लेकर ऑनवर्ड शुरू करें लिक्विड वाले, ठीक है, तो वो हमारे पास ज्यादातर ऐसे हैं कार्सिनोजेनिक हैं। फिर उनके आइसोमर्स भी जो होते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। आइसोमर्स का मतलब ये है कि फिर वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स नहीं होते, वो ब्रांच चेन होते हैं। डेफिनेटली द नेम वुड चेंज अगर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच चेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास फ्यूल से या फ्यूल की बर्निंग से किसी ना किसी प्रोसेस से आ रहे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर इन्हें कन्वर्ट करेगा लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। उसमें हम शामिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर को हम लेस हार्मफुल इसलिए कहते हैं कि पहले भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, गो कि इनकी भी अमाउंट से हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ग्लोबल वार्मिंग का मैटर करता है। स्पेशली इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा ट्रिगर हो चुकी हुई है। नाइट्रोजन की अमाउंट से इतना खास फर्क नहीं पड़ता। Indirect features there are some, but we don't discuss them at the level of IGCSE. वाटर से हमारे पास डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, सो वी नॉट गोना डिस्कस दैट टू। रिएक्शंस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस इज अ प्रीटी सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होती है नाइट्रोजन में। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। ये रिएक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट पॉसिबल नहीं है। कैटलिस्ट हम इन रिएक्शंस के बाद देखते हैं। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, सही। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों चूंकि एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट मे थिंक कि ये दोनों वापस रिएक्ट करके एनओ नहीं बना सकते, तो जी हाँ, बना भी सकते हैं। और एक्चुअली कार्स के जो इंजन होता है उसके अंदर बनाते भी हैं, बट अगेन इससे पहले कि हम इन्हें एग्जॉस्ट में बाहर निकाल दें इस सिस्टम से, क्योंकि बाहर नेचुरली अकरिंग एटमॉस्फेयर में इनके बनने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है। कंडीशन मीट नहीं करती रिवर्स रिएक्शन की। याद रखिएगा, हम कल भी शायद डिस्कस कर रहे थे कि N2 प्लस O2 आपके पास NO में कन्वर्ट होता है एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। कल नहीं डिस्कस किया तो बहरहाल अभी बता दूं कि इतना टेम्परेचर यूजली एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग के अलावा किसी और फैक्टर से नहीं होता, तो हमारे पास ये कन्वर्जन भी नहीं होती। ठीक, आखिरी रिएक्शन बचता है जो यहाँ पर उसने जो है ना वर्ड इक्वेशन के तौर पर दिया हुआ है, वो इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि ये जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के तमाम रिएक्शंस इसी तरह से प्रोसीड होते हैं। हाँ, अलबत्ता जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं सिनेरियो बेस्ड, उसमें कोई एक दो हाइड्रोकार्बन वो कंसिडर कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। अल्केन हो, अल्कीन हो, आप उसका कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाना है हर दफा, बस इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंटली बैलेंस होगी, वो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे होंगे, आपको भी वर्ड इक्वेशन ही चूज करना पड़ेगी जब तक कि आप कोई एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट नहीं बता दिया जाता। बात हो रही थी इसके कैटलिस्ट की।
ये कैटालिटिक कन्वर्टर का कैटलिस्ट है। ये बेसिकली बना होता है एक एलॉय मटेरियल से। ये हमारे पास पोल्यूटिंग ऑक्साइड्स को रिमूव कर रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को भी रिमूव कर रहा है। ये स्पीड अप करता है इस रिएक्शन को एक हनीकॉम्ब सरफेस से। हनीकॉम्ब सरफेस एक्चुअली में छोटे छोटे हम देख रहे हैं सर्कल्स, देखने में सर्कल्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली अगर इतने छोटे लेवल पर हेक्सागॉन्स बनाए जाएं तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इट गिव्स यू द मोस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, इतने सरफेस एरिया पे गैसेस ज्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं। तीनों रिएक्शंस जो हमने नीचे शो किए हुए हैं केमिकल इक्वेशंस में, वो ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। कन्वर्टर जो होता है वो थिन कोटिंग रखता है रोडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट की सॉलिड हनीकॉम्ब सरफेस पे। ये कैटलिस्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लार्जर सरफेस एरिया देते हैं इन रिएक्शंस के अकर होने के लिए। कैटालिटिक कन्वर्टर हम अनलेडेड पेट्रोल के साथ ही यूज कर सकते हैं। प्रेजेंस लेड की, याद रखिए लेड एक वीक मेटल है जो ग्रुप 4 के बॉटम पर पीबी के सिंबल के साथ मौजूद है। ठीक है, ये पॉइजन कर सकता है कैटलिस्ट को और इसकी वर्किंग स्टॉप कर सकता है। ये पॉइजनिंग यूजुअली क्लॉकिंग से होती है। क्लॉकिंग बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो होल्स होते हैं वो किसी तरह से ब्लॉक कर दिए जाएं। ठीक है, वरना इसका केमिकल वर्किंग भी है। क्योंकि इस लेवल पे केमिकल वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करनी होती तो क्लॉकिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इसे बताने का। क्लॉकिंग सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके लिए सिर्फ पॉइजन द कैटलिस्ट लिखना as an answer to your question would be enough and would get you the marks. So poisoning याद करना ज्यादा आसान काम है। इसमें और इम्प्योरिटीज भी होती हैं तो कैटलिस्ट सरफेस पे डिपॉजिट हो सकती हैं, तो कन्वर्टर इवेंचुअली रिप्लेसमेंट कुछ सालों के बाद मांगता है। 3 से 5 साल के अंदर अंदर कन्वर्टर की रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है ऐसी तमाम गाड़ियों में। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग है। इस वर्किंग से जो एक बात आप याद रखेंगे वो ये कि अगर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो उसकी वर्किंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हुए हैं। और दूसरी बात जो आप जहन में रखेंगे वो ये कि कैटलिस्ट जो होता है वो समटाइम्स कुछ खास काम नहीं कर रहा होता सवाए इसके कि वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है रिएक्शन के होने के लिए। ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगती है। आगे चल के जब हम कोलिजन थ्योरी पे जाते हैं तो फिर मैं इस बात को उससे पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। राइट जी, ठीक है आगे सर। आते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स बहुत इजी हैं, हमने बायो में भी पढ़े होते हैं। सो वी जस्ट गोना गो फॉर दीज जनरल फीचर्स। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आया तो इट्स गोइंग टू बी इजी नाउ। एंजाइम्स तमाम के तमाम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक है। हर एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, और एंजाइम रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। इसके स्पेसिफिक होने का ये मतलब है एक एंजाइम एक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा और बाकी तमाम रिएक्शंस के लिए वो बिल्कुल ही यूजलेस रहेगा। जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इनएक्टिवेट यहाँ इन्होंने कोई लिखा तो हुआ है बट आई डोंट आस्क यू टू यूज दिस वर्ड। This word is good for catalysts. Denature is the word good for enzymes. Catalysts and enzymes are both the same thing. They are both speeding up the chemical reaction without being used at the end of the chemical reaction. But enzymes are working in living systems and are biological. Catalysts are working in non-living systems and are usually not biological. So we have different words, inactivated for catalysts and denatured for enzymes. तो कोशिश करें वही लफ्ज इस्तेमाल करें जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बनता है। बात कैटलिस्ट की हो रही है, इनएक्टिवेट का वर्ड यूज करें। बात एंजाइम की हो रही है, डीनेचर का लफ्ज इस्तेमाल करें। बाय हीट, इससे मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ देम वुड स्टॉप वर्किंग बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक ऑप्टिमम पे वर्किंग करते हैं। ऑप्टिमम जो होता है वो हमारे पास अराउंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है फॉर बेस्ट वर्किंग। ये सेंसिटिव है पीएच के लिए। इनकी न्यूट्रल कंडीशंस में वर्किंग बहुत अच्छी होती है। चेंज पीएच टू जस्ट 1 point and they would totally stop working. They would stop working at 6, they would stop working at 8, they're good around 7. बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में हम एंजाइम्स यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकल स्टेन्स, स्वेट, ब्लड और इसके अलावा बहुत सारे और फूड स्टेन्स को भी रिमूव कर सकता है। ये हम डिटर्जेंट्स जिसे हम कॉमनली सर्फ के नाम से जानते हैं उनके अंदर यूज करते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं। प्रोटीन्स बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ये कंप्यूटर इमेज आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया दिला सकता है।
कि कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के साथ, प्रोटीन्स या फैट्स के साथ ये वर्किंग करते हैं। सरफेस कैटलिस्ट, वही जो बात मैं अभी कर रहा था कि हम कुछ सरफेस कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे कोलेशन थ्योरी के स्टार्ट में, तो हम वही करने जा रहे हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिन्हें कैटलिस्ट चाहिए, और कैटलिस्ट के लिए अभी तक जितने नाम हमने पीछे एग्जांपल्स के तौर पे कंसिडर किए हैं, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक बड़ा ग्रुप कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करता है जब वो एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल को टू द सरफेस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब और एडसॉर्ब में फर्क है। अगर कोई चीज अपनी पेनिट्रेशन शो कर रही है जस्ट अराउंड द सरफेस, ठीक है, सिर्फ इतनी सी जगह पे पेनिट्रेट कर सकती है, तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एडसॉर्ब का। और कोई चीज पेनिट्रेशन कर रही है ऑल द वे इन, तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्ब का। केमिस्ट्री में दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपके पास एक फोम का पीस है और आप उसे वाटर में डिप करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बिकॉज वाटर ट्रैवल करता है थ्रू ऑल द पोर्स, और वो अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आप उसे थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश करें, यू वुड सी अ लॉट ऑफ वाटर इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम इट। उसकी निस्बत हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्लाइटली वाटर रिपेलेंट होती हैं या जिनके अंदर वाटर पेनिट्रेशन इतनी क्विक नहीं होती, तो अगर आप उसे डिप करेंगे पानी में, तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ सरफेस गीली होगी और पानी जो है वो ऑल द वे इन पेनिट्रेट या ट्रैवल नहीं करता। ऐसे केस में हम वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्ब का। एब्जॉर्ब सरफेस बेस्ड एब्जॉर्प्शन होती है। सरफेस बेस्ड एब्जॉर्प्शन के लिए हम एडजॉर्ब का वर्ड यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉमनली सॉलिड सर्फेसेस और कैटलिस्ट के अंदर एक फिनोमेनन है जो हमने नोटिस किया। ठीक है, ये फिनोमेनन हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले कैटलिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम देता है। हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि हम घी बनाने के पर्पस के लिए या मार्जरीन के पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, उसके लिए फाइनली डिवाइडेड निकल। ये तमाम सॉलिड कैटलिस्ट हैं और सरफेस कैटलिस्ट हैं। सरफेस कैटलिस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। आई यूजुअली कम अप विद द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल्स फॉर स्टूडेंट्स। आपको एक अंडा कुक करना है, तो हम क्या करते हैं? हमें अंडे को हीट करना होता है without destroying the egg. So of course we can't just break the egg and throw it into the fire. We'd never do that. Instead, what we have are frying pans. Frying pans क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक surface, conductive surface provide करते हैं। आप उसके ऊपर egg throw करें, ठीक है, और वो उसको और फायर के दरमियान में डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है, लेकिन एक सरफेस होती है जिसको प्रोटेक्शन और कुकिंग दोनों में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में भी ये आयरन एक सरफेस प्रोवाइड करता है। हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस इसके ऊपर आके एब्सॉर्ब होती है, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर आके एब्सॉर्ब होती है। उसी एब्सॉर्प्शन में वो वहां पर रिएक्ट करते हैं और लीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो इट वर्क्स लाइक अ फ्राइंग पैन। द सरफेस इज रेंडर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एग कुक होता है उसी फायर के ऊपर, जिसमें अगर वो डायरेक्ट फेंक दिया जाता तो वो जल जाता, ठीक है, उसी तरह इस सरफेस एरिया के ऊपर हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है। I think that example is good enough to explain you how surface catalysts work. Is it? जी सर। All right, good. Let's move on. Next up is collision theory. Before we start on with the collision theory, I would like to tell you a few basic points of collision theory. Collision theory हमारी बुक में सारी explain हुई है, एंड में जाके वो basic points consider करता है। I actually like to do the opposite. मैं शुरू में points बताना पसंद करता हूँ ताकि हमें collision theory understand करने में मदद मिले। Collision theory is all about particles and their collisions. Collision theory states, number one, particles move all the time. That movement is very much dependent on the phase or the state of matter. It's very much understandable that solids are only going to vibrate, the liquids are going to slide past one another, and the gases are going to move in straight line, longer distances, random haphazard motion. Understandable, but the particles would keep moving. That's point number one. Point number two, particles collide with one another.
Point number 3, the collisions have different types. We can divide the collisions into 2 types, the successful collisions and the unsuccessful ones. The successful collisions are those in which the reactant particles collide with one another, and after the collision, they actually leave each other in the form of product. Okay? So in this case, the collision has the minimum amount of activation energy or energy greater than that. And this is the only prerequisite for the successful collision. Successful collision के लिए ज़रूरी है कि दोनों reactant particles हों, collide करें, उनके पास minimum amount of energy for the conversion of reactants into products which we have defined as activation energy, energy उससे उतनी या उससे greater हो. When they're going to return, they're not going to return as reactant particles, they are going to return as product particles. The unsuccessful collision is the one in which the reactant particles collide with one another, and after the collision, they actually return as reactant particles. The only sole reason behind it is that the energy is less than, or less than actually, not equal to, less than activation energy. It's pretty simple and straightforward as that. And that explains the entire collision theory at your level. If you have any question, confusions or questions, go ahead and ask. No, sir. All right. So, अगर note करना है तो कर ले. Let me in fact take a screenshot and send it to you later. So, now we are going to use this collision theory, and we're going to talk about the effect of the change of conditions on rate of reaction in terms of collision theory. Remember, past paper questions में आपको बड़ा अच्छे तरीके से well defined question मिलेगा जिसमें आपने in terms of collision बात करनी होगी. So I'm going to give you a few sets of phrases that you can use, and you can always be safe, you can always be correct. So let's start with a few factors. पहला factor जो है हमारे पास यहाँ पर A part of the diagram, वो उसने lump और उसके अलावा small pieces का show किया हुआ है. अगर हमारे पास एक lump of iron है, ठीक है, ऑक्सीजन उन आयरन एटम्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाएगी, बहुत थोड़ों के साथ इंटरैक्ट करेगी. लेकिन आयरन अगर स्मॉल बिट्स में है, ऑक्सीजन क्लाइड करेगी बहुत ज्यादा एटम्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स इज गोइंग टू रिएक्ट मोर. द सरफेस एरिया is becoming greater if you are using a smaller particle size, and hence it's increasing the rate of reaction. The terms or the phrases you're supposed to use is, with greater surface area, there are more chances of collisions. आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ जितने collision chances हैं और यहाँ पर right पर उसकी निस्बत कितने ज़्यादा हैं. When chances of collision increase, chances of successful collision also increase. When chances of successful collision increase, the conversion from reactants to product is greater, hence faster rate of reaction. Now sum this up in just one sentence. With increased surface area, there are more chances of collisions and successful collisions, and conversion from reactants to products is greater, giving faster rate of reaction. This entire sentence can be written in 2 lines explaining this specific factor, surface area, and you can easily change the factor every time, but go with the same statement if it's, of course, if it's giving a faster rate of reaction. And that's how you can always use the phrases to answer the questions correctly. Remember,
आप बता रहे हैं किसी भी फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज से increased chances of collisions, hence increased chances of successful collisions, hence more conversion of reactants to products, and lastly faster rate of reaction. ये 4 पॉइंट्स आप एक सेंटेंस में सम अप कर रहे हैं, चाहे तो इन 2 सेंटेंसेस में भी लिख लें. It all depends upon your space and marks that you have, so you can adjust the sentences or the phrases accordingly, but most of the time you're going to work like that. ठीक है. P part पर आते हैं. P part is all about concentration. आप नोटिस करें कि हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, और एसिड ऑफ कोर्स अगर एक सॉल्यूशन में है तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे. उसने वाटर मॉलिक्यूल्स भी स्पेसिफाई किए हैं, रेड कलर के एसिड पार्टिकल्स भी स्पेसिफाई किए हैं, और मैग्नीशियम रिबन शो किया है. We have the same magnesium ribbon in both cases. It's just that we have dilute and concentrated acids in the 2 different experiments. और जहाँ पर concentrated acid है वहाँ पर हमारे पास red particles of course ज़्यादा है, तो chances red particles के साथ collide करने के successfully और फिर उसी तरह से successful collision और conversion reactant की product में और faster rate of reaction सब possible है. So I think it's pretty clear and obvious, right? जी सर. Okay, the one I was talking about previously yesterday, the low and high pressure factors, these are given over here. Now the low and high pressure factors are also considered as the factors of concentration for gaseous reactants only. In the low pressure, you would see they are going for a higher volume, as this is the volume in this case. And for a higher pressure, we are moving on to a smaller volume, hence the volume and pressure are inversely proportional factors. But when you have a higher pressure, you can squeeze more molecules into a smaller space, which actually increases the chances of collisions. And of course, successful collisions would be more frequent, and the reactant particles would convert to products, giving us a faster rate of reaction. This is what I was talking about. Now, seeing a diagram and imagining it is much more realistic and easy. Let's move on to the next page. They used almost the same kind of terms over here too, but this time they're talking about a catalyst. So, surface area of zinc in case of reaction emitters, lumps and smaller pieces are of course going to give us 2 different rates of reactions, and the smaller pieces are going to give us the faster rate of reaction. I hope you understand why. B part, concentration of acid works the same. So there are frequent chances of collisions and successful collisions, hence faster rate of reaction. Lastly, what we haven't explained before is temperature. And as you can see that these white balls have smaller tails or trails, this represents a lower temperature. This faster movement and longer tails or trails represent a higher temperature. High temperature gives them more force to collide with, hence the chances for successful collisions are much greater, because this time more probably they will have the energy equal to or greater than the activation energy, hence the conversion of reactant into product is more probable. All right? जी सर. Which brings us to the next part, and they have summed it up over here. The minimum amount of energy is known as activation energy for a reaction to give us products from its reactants. Each reaction has its own different value of activation energy. When particles collide, they must have a combined energy greater than this activation energy, otherwise they will not react and return as reactant particles. Chemical reactions occur when the reacting particles collide with one another. This is also a kind of crux of or result of the collision theory we have been talking about. Just give me a second, please. The activation energy and the sum or all the results that we can gain from this collision theory. Now, in order to discuss catalyst, again, let's discuss catalyst as with different definitions. Yeah, we can of course put up the catalyst as the chemical that increases the rate of reaction. But how is it capable of doing that?
can also be defined. So we are going to give different definitions from the same diagram that we can see over here. The Elk Mountain diagram is a common diagram that has been used to show the catalyzed and uncatalyzed reactions. So you can see the catalyzed path, the easier one, or the catalyzed path, the more difficult or the longer one. So the reactions are more easily converted into products if the path is catalyzed, and vice versa. So we came up with definitions other than the catalyst can speed up a chemical reaction and stay unused at the end of the reaction. Apart from that, what we can say is that catalysts may provide an alternative route for reaction, as you can see over here. Sometimes, and it has happened hardly a couple of times in the past 10 years, ऐसा हुआ है कि कैटलिस्ट की मेन डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को और अनयूज्ड रहता है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख दी जाती है और आपसे फिर एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन मांगी जाती है। ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत रेयर हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ये हैं जो मैं इस वक्त लिख रहा हूँ। Number 2, it lowers the activation energy requirement for a reaction. हम बाज़ मर्तबा हर ऐसी टर्म में may यूज कर लेते हैं। May is more like a safe word. Last, which we have previously discussed, a catalyst may render its surface for reaction to occur. So these are the three alternatives apart from the original definition. Remember, these alternatives are only given if they write the standard definition as a part of the question statement and ask you for an alternative definition. Only then you're supposed to provide one of these. And what you're supposed to provide is written in order over here. So it's better if you prefer only point number 1. Sometimes my student makes up point number 1 and 2 in order to answer the question. And you can only come up with all 3 if there are more than 4 lines and the word explain becomes a part of the question statement. This has happened just once in past 10 years. I think तीनों मैं explain कर चुका हूँ. Let's just go through them real quick. Catalyst provide करता है alternate route reaction के लिए. हम catalyzed और uncatalyzed routes अपने सामने diagram में देख सकते हैं. Catalyst low कर देता है requirement activation energy की किसी भी reaction के लिए. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. इस diagram को देख के भी अंदाजा होता है कि energy requirement actually कम हो चुकी हुई है. Of course, mountainous और shortcut path से अंदाजा हो जाता है. कैटलिस्ट अपनी सरफेस रेंडर कर सकता है रिएक्शन के अगर होने के लिए. इस डायग्राम से हरगिज पता नहीं चलता. ये पीछे हमने सरफेस कैटलिस्ट में डिस्कस किया तो मैंने इसे फाइनलाइज करते हुए यहाँ पर लिख दिया. इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें. नहीं सर. ऑलराइट, चूंकि मेरे पास टाइम का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है तो ऐसा करते हैं कि अब दोबारा ज्वाइन करते हैं 2 से 3 मिनट तक और फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है.